अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर क्वाइट well aware that we have in previous videos we talked about, we discussed about the first two units of your education syllabus. And today we are going to start the third unit of your syllabus, that is understanding agencies of education. My dear students, as you are aware that in the first unit, that was concept of education, we talked about narrow and broad meaning of education. And in order to understand this unit, the heading of the unit, that is agencies of education, first we have to remember, we have to recall narrow and broad meaning of education. Dear students, as you are aware कि narrow meaning में जो हम कहते हैं कि education जो है is a pre-planned activity. It is given at a specific place called school for specific period of time by a specific person whom we call teacher. So my dear students, you have to recall this कि narrow meaning में हम कहते हैं कि education जो है वो एक process है जो स्कूल में होती है by a particular person whom we call teacher. इसके लिए एक fixed curriculum होता है, इसके लिए एक fixed content होता है, लेकिन broadly हम कहते हैं that every experience of life is education. जो जिंदगी की छोटे से छोटी एक्सपीरियंस या बड़े से बड़ी एक्सपीरियंस, जैसा कि वो लॉज की डेफिनेशन कहती है, falling in love, cutting off watermelon, being caught in a storm. Each of these experience has educational effect on our life. Or we can say, किसी definition में हमने ये भी पढ़ा था, one is being educated by one's occupation. एक इंसान अपने occupation से भी education हासिल करता, means every positive experience of life is education. Means we get education everywhere, anywhere, anytime. हम कहीं से भी किसी से भी education हासिल कर सकते हैं. This you already know. Now what is a relation of this with agencies, मैं आपको बताऊंगा. Agencies of the education जानने से पहले first you must understand what is agency. हम अक्सर सुनते हैं ये लफ्ज़ agency. हम कहते हैं गैस एजेंसी, हम कहते हैं न्यूज़ एजेंसी, हम कहते हैं मिल्क एजेंसी. तो लेट्स टेक न्यूज़ एजेंसी, और वी कैन से मीडिया एजेंसी. व्हाट इज अ न्यूज़ एजेंसी? इट इज एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. हम छोटे शॉप से लेकर एक बड़े मीडिया इदारे तक उसको एजेंसी कहते हैं, न्यूज़ एजेंसी कहते हैं. तो ये क्या है? व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करना. जिस तरह न्यूज़ एजेंसी का काम है is the organization which has the specific purpose of providing news, जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करेगी, चाहे टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए. In the same way, we say gas agency, the organization which is specific, which is specialized for providing gas. In the same very manner, so we define agency. It is the institute, it is the organization which provide a specific service, जो किसी खास तरह की सर्विस, जो किसी खास तरह की खदमत लोगों को प्रोवाइड करे, उसको हम एजेंसी कहते हैं. नाउ
The name of the unit is Agencies of Education, understanding agencies of education. Those organizations, those institutes of the society which are specifically or which are specialized or नॉन स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड भी हो यानी स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए मेंट है या नॉन स्पेसिफिकली इन ए नॉन स्पेशलाइज्ड मैनर जो हमें प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन. दोज इंस्टीट्यूट्स, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, टू द यंगर जनरेशन, उनको हम कहते हैं, उसको हम अगर एक होगी तो उसका हम कहेंगे एजेंसी ऑफ एजुकेशन. बात को समझना माय डियर स्टूडेंट्स. कोई भी वो इदारा, कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके जरिए से हमारी जो यंगर जनरेशन है दे गेट एजुकेटेड, दे गेट एजुकेशन, उसको हम कहेंगे एजेंसी ऑफ एजुकेशन. एजेंसी ऑफ एजुकेशन. क्लियर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसका मकसद होगा या जो अनकॉन्शियसली एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर दी होगी, उसको हम कहेंगे एजेंसी ऑफ एजुकेशन. लेकिन टॉपिक इज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. वन मोर क्लियरिफिकेशन रिक्वायर्ड. अगर यहाँ पे होता एजेंसी ऑफ एजुकेशन तो हम कहते हैं कि सोसाइटी का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो स्पेसिफिकली नैरोली हम कहते हैं इट इज स्कूल. लेकिन यहाँ पे एजेंसीज है, और जब हम ब्रॉड मीनिंग पे नज़र दौड़ाते हैं, जो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है, जो ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, तो वो कहती है कि वी आर बीइंग एजुकेटेड बाय आवर सोसाइटी, we are being educated by our occupation, we are being educated everywhere. हमें हर जगह, हर शक्ल से एजुकेशन मिलती है. तो दैट मीन्स कि सोसाइटी में कोई एक ही इदारा नहीं है, सोसाइटी में सिर्फ स्कूल ही नहीं है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से हमें एजुकेशन मिलते हैं. दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द यूनिट इज़ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मीन्स कि बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी यंगर जनरेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो लेट्स कम टू द एजेंसीज. मीन्स कि अब ये एजेंसी नहीं है, देयर आर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. दोज वेरियस specific or non-specific organizations which provide education to the younger generation are called agencies of education. अब हम देखते हैं, जब हम नैरोली कहते हैं एजुकेशन डिफाइन करते हैं, वो कोई स्पेसिफिक इदारा जहाँ से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एजुकेशन मिलेगी, तो इसमें आएगा स्कूल, इसमें आएगा रिलीजियस इंस्टीट्यूट. ये हो गया अगर सिर्फ नैरो मीनिंग होती. लेकिन जब हम एजुकेशन को एज ब्रॉड टर्म लेंगे तो स्कूल के साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूट के साथ साथ इट इज़ द फैमिली. फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट which provides us education, which educates us, which gives us education, which teaches us do's and don'ts of life, which gives us experience, which gives us information. Means family is the first institute which provides education, so it is an agency. उसके बाद फैमिली से निकल के is the society, is the society which provides education. Society के बाद your media, we can say mass media, जिसमें आएगा न्यूज़पेपर, जिसमें आएगा रेडियो, जिसमें आएगा टीवी, जिसमें आएंगे मैगजीन्स. These are the various agencies of education which are meant for providing education to the students. अब इसमें कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका सिर्फ यही मकसद है टू प्रोवाइड एजुकेशन, सपोज स्कूल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट.
तो इनको हम कहेंगे स्पेसिफिक एजेंसीज, यानी इनका सिर्फ काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो बाकी एजेंसीज हैं उनका एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारा ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा काम है, लेकिन एजुकेशन भी मिलती है जिसमें हमारी फैमिली आएगी। मीन्स ये नॉन स्पेसिफिक एजेंसी है, ये स्पेसिफिकली मेंट फॉर एजुकेशन नहीं है। सोसाइटी ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारे काम करता है। मीन्स इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंट फॉर एजुकेशन। न्यूज़पेपर, इसके बहुत सारे और भी काम है एजुकेशन के साथ साथ, रेडियो, टीवी, मैगजीन, दीज आर द नॉन स्पेसिफिक, but these two are specific agencies of education. These are only meant for providing formal education. This is all about agencies of education, my dear students. First you must understand the name of the unit, understanding agencies of education. तो पहले आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज एजेंसी। तो एजेंसी मैंने आपको बताया कोई भी वो सोसाइटी का वो इदारा जिसका कोई स्पेसिफिक काम होगा, जो कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता होगा सोसाइटी को, टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो उसको हम एजेंसी कहते हैं। अब वो इदारे, वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस which are meant for providing education to the students, or we can say to the younger generation, those are called the agencies of education. तो agencies of education में मैंने आपको बताया school is an agency of education, religious institutes are the agencies of education, family, society, newspaper, radio, TV, magazine, these are the agencies of education. Now these agencies have been classified, these agencies have been divided, these agencies have been categorized into 3 specific types. These have been classified into 3 types. Those 3 types are: number 1, formal agencies of education; number 2, informal agencies of education; and third one is the non-formal agencies of education. Now what is formal agency of education, or what are the formal agencies of education, what are the informal agencies of education, what are the non-formal agencies of education? This is one type of one way of categorization. Second way of categorization is these have been classified into active agencies and passive agencies of education. One way of classification is that they have been classified into 3 types: formal agencies, informal agencies, and non-formal agencies. And the second way of categorizing, second way of dividing, classifying these agencies is that they have been classified into active and passive agencies. Now what is the criteria of becoming a formal agency or informal, or what is the criteria of being called an active agency or passive agency? We will be discussing that in our next video. Till then, take care. Khuda Hafiz.